the purpose of today's lecture was to get an overview of the last week's class और चैप्टर 4 जो हमने फिनिश किया था उसको थोड़ा सा और फिनिशिंग टचेस हम दे दें. So that was the purpose of today's lecture. ये जो चैप्टर 4 है आप इसको बुक में पढ़ें. इट्स अ वेरी लॉजिकल डिस्कशन अराउंड द रूट्स. एक तो हम एनालाइज करते हैं इस चैप्टर में कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिस्टम्स, अगर आप उस सिस्टम इफ यू अप्लाई एन अ स्टेप इनपुट on that system, it will give different kinds of responses, and the form of that response depends on what kind of system is. By the kind of system, I mean whether it is an undamped system, underdamped system, critically damped system, overdamped system. ठीक है. तो इस तरह के systems आपको कैसे पता चलेगा कि ये undamped system है, underdamped system है, critically overdamped? वो दो तरीकों से आपको पता चल सकता है. एक तो आप उस पर कोई इनपुट अप्लाई करें तो वो जिस तरह का रिस्पॉन्स होगा उस रिस्पॉन्स से आप पता चला सकते हैं कि ये किस किस्म का सिस्टम है. फॉर एग्जांपल हमने ये फिगर बड़ा अच्छा उसको रिप्रेजेंट करता है. सो इट्स द काइंड ऑफ द सिस्टम इट इज that kind of the response it will have. For example, हमने देखा था कि overdamped system लास्ट लेक्चर में कि overdamped system का रिस्पॉन्स ऐसे होगा, underdamped system का रिस्पॉन्स ऐसे होगा, undamped system का रिस्पॉन्स जो है वो इस तरह का होगा. ठीक है. और क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम का रिस्पॉन्स तकरीबन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की तरह होता है. ठीक है. सो एक तो ये तरीका है कि आप उसको एक्सपेरिमेंटली करें. एक तरीका ये है कि आप इस इक्वेशन को देखकर भी आप पता चला सकते हैं कि ये ओवरडैम्प्ड सिस्टम है या अंडरडैम्प्ड सिस्टम है. वो इक्वेशन आप जो S का जो कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस किस्म का सिस्टम है. और वो हमने, अगर आप प्रेजेंटेशन में जाएं तो कंपैरिजन के थ्रू आप पता चला सकते हैं. ठीक है. जो सिस्टम का इक्वेशन है S² प्लस सम कांस्टेंट इनटू S प्लस सम कांस्टेंट, उसका न्यूमरेटर भी कुछ भी, तो उसको आप इससे कंपेयर करें. ठीक है. तो आपको कांस्टेंट बताता है स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी. इफ यू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दैट you will get the natural frequency of the system. And similarly, having the natural frequency and the damping constant, you can determine the damping ratio. ठीक है. तो इस जो कोएफिशिएंट ऑफ S है इससे आप you can determine the damping ratio. तो damping ratio का फायदा ये है कि if you know if this damping ratio is greater than 1, you will know that the system is overdamped. And what kind of response the overdamped system will have? It will have this kind of response. ठीक है. Similarly, if you know that it is equal to 1, the damping ratio, it is a critically damped system, and its response even इस figure में भी है कि critically damped system का response कैसे होगा. It has a short blip or a short peak and then it get constant over time. ठीक है. And same is the case with underdamped system. Underdamped system का जो response है वो इस तरह का होगा. ठीक है. There is a short blip and then critically damped system का response ये है. Overdamped system का response उससे भी slow है. और undamped system जो है वो it shows a continuous oscillation. ठीक है. और मैंने आपको बताया था कि इसका फायदा ये है इस सिस्टम के बारे में जानने का. इसका फायदा ये है कि जब रियल लाइफ में आप ज्यादातर इनपुट्स जो हैं वो स्टेप इनपुट के फॉर्म में होते हैं, तो why is it important to know about the responses of the system कि जब आप उसको इनपुट अप्लाई करते हैं तो आपको पता चले कि सिस्टम का रिस्पॉन्स स्टेबल है और कितने टाइम में वो इनपुट वैल्यू को अचीव करता है. मैंने बड़ा सिंपल सा मिसाल आपको स्पीड ऑफ फैन दिया था. ठीक है. रेगुलेटर के थ्रू आप स्पीड कंट्रोल करते हैं. You want your fan to be stable,
but you also want to achieve your desired speed as soon as possible. ठीक है, तो ये speed of the fan और stability of the fan किन चीजों से define होती है, वो in, ठीक है, damping of the system and natural frequency of the system. फिर हमने डिस्कस किया कि ज्यादातर जो सिस्टम्स हैं वो आपके पास अंडर डैम सिस्टम्स हैं, ठीक है, और अंडर डैम सिस्टम जो है वो एक उसमें आप जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग कांस्टेंट ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि आप जो है वो एक ऑप्टिमल सिस्टम डिजाइन करें. ऑप्टिमल सिस्टम ये है कि आप रिलेटिवली जल्दी आप इनपुट वैल्यू अचीव करें, जो आपने सिस्टम को इनपुट दिया है वो रिलेटिवली शॉर्ट टाइम में वो अचीव करे और सिस्टम आपका स्टेबल रहे, ठीक है. इसमें जो एक और है कि अब अगर आप सिस्टम के पोल्स देखें, which poles are nothing but the roots of denominator, तो ये सिस्टम के पोल्स हैं. उसका इन पोल्स के दो पार्ट्स हैं, एक उसका रियल पार्ट है, ठीक है, which is this one, which is the damping constant into natural frequency. This one is the imaginary part, ठीक है. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और हम इसको डैम्प ओमेगा डी को हम डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं. इसी तरह जो इसका कांस्टेंट रियल पार्ट है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल डीके फ्रीक्वेंसी, ठीक है. और इसका जो जब आप सिस्टम का सोल्यूशन लेते हैं, इसी सिस्टम का आप इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले तो आपको सिस्टम का सोल्यूशन देगा. सिस्टम का सोल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बल्कि बस जस्ट ये है कि ये आपको रिस्पॉन्स बताता है एट एनी टाइम की, कि अगर आपने लेट्स से यू अप्लाइड अ स्टेप इनपुट, हाउ विल द सिस्टम रिस्पॉन्ड, ठीक है. देखिए आप इस रिस्पॉन्स के दो पोर्शंस हैं. एक इसका रियल पार्ट है विच इज इक्वल टू एक्सपोनेंट रेज टू द पावर माइनस सिग्मा डी टी. व्हाट इज सिग्मा डी? सिग्मा डी इज द रियल पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशन, ठीक है, into cos into omega dt minus pi, where omega d is the imaginary part of this solution, omega into 1 minus this, ठीक है. So जो frequency response है of the system, that is dictated by the imaginary part of the solution, whereas as the decay of the system, e raised to power minus d, this is dictated by the real part of this solution. So you can see the same in this graph. Exponential decay generated by the real part of the complex, and the sinusoidal oscillation generated by the imaginary part of the complex pole pair. और मैंने बड़ा simple सा, it's the same example of a car ignition. When you start a car or when you start a motor, there is an initially large vibration. So the vibration is because of these oscillations of the system, and then it decays out with time, and there is then some constant vibration. System gets into some constant mode of running. So वो जो vibration है वो decay होता है with the passage of time because of this component, ठीक है, and that frequency of the vibration is dictated by the damped natural frequency of the system. ठीक है, फिर हमने we defined few terms as well. उसमें से कुछ terms ये हैं. For example, for an undamped system, the peak time is equal to pi divided by damped natural frequency, and the peak time is the time the system will hit, his system response will hit at the peak, ठीक है. देखिए इस सिस्टम में एक पीक है, ये सबसे ऊंचा पीक है, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है, बाकी तो फिर स्लो हो जाता है सिस्टम, ठीक है. So we are interested in this peak. When will the system hits its peak? That time is determined by the peak time, and it's equal to this properties of the system that are defined by the natural frequency and the damping ratio. इसी तरह settling time है, ठीक है. Why are we interested in settling time? The reason we are interested in settling time कि जब हमने इस सिस्टम पर कोई स्टेप इनपुट अप्लाई किया तो कितने टाइम में सिस्टम आराम में आकर वो जो इनपुट है आपका अचीव कर लेगा. How long will it take the system to get to a stable state again, ठीक है. So this is defined, we call this as settling time, and again the settling time depends on the zeta, which is the damping ratio, and the natural frequency. So it's inversely proportional to this. That means, as we discussed, that zeta omega
omega n is the real part of this solution. So in other words, the settling time, the time it will take the system to settle down, it depends on the real part of the solution. Then it's this one OS we call percent overshoot. See, percent overshoot. We are interested in the percent overshoot for the reason that we want to know that initially what kind of large vibrations we expect from the system. तो परसेंट ओवरशूट से हमें पता चलेगा कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा जब आपने स्टार्ट किया तो जब डेफिनेटली वी कॉल दिस पोर्शन एज अ this region as a region of instability. ये वाला region जो है ना operating system, ये this is the region of instability. So we want to know that how large will be the amplitude of this instability. That is what we call the overshoot. And again, see at the equation of the overshoot depends on the damping constant or the damping ratio. So just keep these things in mind. The rise time, how much time it will take for the system to reach from 10% to 90% of the time, it depends on the natural frequency of the system as well. Okay. And in this case, we discussed that what will happen when you if you move on in the vertical direction or the horizontal direction or the or a direction which is at a constant angle. अगर आप एक रेडियल लाइन में जाते हैं तो क्या होता है सिस्टम के साथ, ठीक है? तो यहाँ आपको in this case you are moving on the vertical direction, ठीक है? एक नेचुरल ये भी आप समझ सकते हैं कि ये जो vertical axis है, we call it imaginary axis, and those imaginary axes are the function of omega, which is the function of frequency. So as the roots of the system follows an upward vertical direction, the frequency of the system will increase. See, the frequency of the vibrations or the oscillations is increasing. However, as we know that the settling time depends on the real part of the solution. So the settling time will remain constant. That is why we call it a constant settling time. The decay time will be the same. However, the oscillations of the frequency of the oscillation will increase. And now, if we come here and if we move in the right in the left direction in a constant horizontal direction, so we see that in this case the peak time will be constant. Why it will be constant? Because the peak time, the peak time, it depends on the vertical axis, omega n into square root 1 minus zeta square. ठीक है? तो आप, if you are moving in the real on the real axis in the towards the left hand, the peak time will remain the same. The time the system will hit the peak of its response, it will remain the same. And this one is also interesting. If you move in the radial direction, the overshoot of the system will remain constant. It will not change. Although when you move in the radial direction, the speed of the response, the frequency of the response, plus the decay of the system will also increase. Okay, so this diagram is interesting. As long as you remain on the horizontal time, the peak time will be the same. As long as you remain on this vertical line, it tells you the maximum settling time. तो अगर आप for example ये कोई system है जिसकी roots यहाँ lie करते हैं at point x, so by drawing the horizontal line and drawing the vertical lines, the vertical line will tell you the maximum settling time, whereas the horizontal time will tell you the maximum peak time of the system.
So this was just an overview of few things that I thought I couldn't explain very well in the last lecture. I also want to go through over few examples which are relatively easy. Let's have a look at the example 4.5, 4.2. It's a first order system. You have to find the time constant tau, the settling time, and the rise time. But it is for the first order system. Similarly, similar is the case with the example. So this one is easy. You have a transfer function and write by inspection the output in general terms. If the input, if it has a step input, what will be the response of the system? See, the response of the system has these roots: s minus 1, s is equal to minus 7, s is equal to minus 8, s is equal to minus 10. All of these responses are here. So try these examples. Example 4.1, example 4.2. You can determine the time constant, the settling time, the rise time for first order system using these very simple formulas. So this settling time is this, the rise time is equal to this. Also, this is interesting example, is 4.2 example. By inspection, write the form of step response of the system in figure 4.9. आपके पास ये figure 4.9 है. Find out what will be the response of this system. And as I told you, you can determine the response of this system by looking at the constant coefficient of s, and by looking at this frequency omega n square. So this is the frequency. This defines the square of the natural frequency, whereas the 10 it is equal to 2 into zeta into omega n, and then from that value you can determine the what will be the response of the system. For example, अगर आप यही system लें तो किसके बराबर है? 200 divided by s square plus 10s plus 100. ठीक है, तो आप इसको कंपेयर करें इसके साथ. ओमेगा n स्क्वायर s स्क्वायर प्लस as प्लस 100, जबकि a बराबर है 2 zeta omega n. Sorry, this one is b. और b किसके बराबर है? वो ओमेगा n स्क्वायर के बराबर है. ठीक है. So in other words, 2 zeta omega n is equal to, अगर ये दोनों कंपेयर करें आप तो this is equal to 10. ठीक है. और आपके पास ओमेगा n स्क्वायर किसके बराबर है? 100 के बराबर है. ठीक है. So you can determine that omega n is actually equal to 10. Now put the value of omega n over here. ठीक है. तो जीटा किसके बराबर होगा? 1/2 के बराबर होगा. ठीक है. So the damping ratio is equal to 1/2. Can any one of you tell me that is it an over-damped system, under-damped system, or critically damped system, or undamped system? Anyone? So हमने देखा कि in this case zeta is smaller than 1. If it is smaller than 1, then it is an under-damped system. ठीक है. If it is an under-damped system, then the response of the system will be, then this will be the response of the system, as we can see in the figure C. और इसके जो आप बाकी constant हैं, you can determine these quite easily.
ठीक है. So try this example 4.2. अच्छा, ये जरूर देखें, ये इट्स पेज 167 168. ये इसमें जनरल रिस्पॉन्सेज ऑफ द सिस्टम डिस्कस किए गए हैं कि रूट्स ऑफ द सिस्टम कैसे होंगे. इट्स एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन. क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम का जनरल सोल्यूशन कैसा होगा, अनडैम्ड सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा होगा. 4.3 is a very good example. For each of the following transfer functions, provide by inspection the general form of the step response. It's the same, similar to example 4.2. And example 4.3. So you have to determine in example 4.3, you have to find the damping ratio and the natural frequency. You can determine it by looking at the coefficient of S and the and this constant in denominator. So read all these discussions about the roots. Example 4.4. Similarly, it's numerically or analytically it's very easy. Example 4.4. You must do it. It's the repetition of the same example. ये डिस्कशन पढ़ें जरूर. पेज 174, 173, 172. ये डिस्कशन जरूर पढ़ें. It's this, we have discussed this in class, but it is in more details in your book. Or example 4.5. It is for second order system. You have the formulas and you can determine the peak time, the percent overshoot, the settling time, and the rise time of the system. ये डिस्कशन जैसे आपने देखा हमने वही की प्रेजेंटेशन के अंदर. And finally, example 4.6. It is also quite easy. It's simply you have to put the values and find out the peak time, the percent overshoot, and the settling time of the system. ठीक है, ये आप लोग एग्जाम्पल 4.6 4.7 तक कर लें. और yes, even 4.8 is easy. Skill assessment exercise 4.5, and they have also given a MATLAB code, but right now you should prepare yourself for the exams, and then we will discuss these after the midterm is over. ठीक हो गया. Any questions? जी जी यासीन जी नहीं है क्वेश्चन. कोई एग्जाम के बारे में सर अगर बताए किस तरह पैटर्न होगा. Exams will be we will have MCQs part, and we will have a small numerical part as well, 1 or 2 questions. And the MCQs will be the same, the way we discuss things. I must emphasize that the discussion in this book is very good. So they explain very well mathematical equations, and the exam will be the MCQs in exam will be the same. It will be some logical discussion about anything, about the equations. जिस तरह मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि रियल पार्ट को आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रियल पोल्स जो है लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे तो क्या होगा. You can look at the roots and then you can answer these questions. But obviously you have other chapters. Chapter 4 is not the only one chapter in this course. तो वो बाकी 2 chapters भी पढ़ें और try to understand. So I hope so exam will not be that much complicated, provided that you have studied well. ठीक है जी, शुक्रिया. एग्जाम्पल्स ट्राई करें. मेरे ख्याल में जो स्किल असेसमेंट के या बाकी एग्जाम्पल्स है, they are not that complicated. If somebody has tried it, he can tell me.
बिल्कुल जी, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन बात मुश्किल थे। ठीक है। और इसके अगर आप इवन एग्जाम के बाद या यू मस्ट ट्राई दी मैटलैब कोड्स। बहुत आसान दिया गया है आपके बुक में, हर एग्जांपल के साथ इवन उसका मैटलैब कोड भी दिया गया है। ठीक है, तो इट्स वेरी गुड फॉर यू टू लर्न दिस प्रोग्रामिंग स्किल्स इन दिस कोर्स एज वेल। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हैं, उनको उनका एनालिटिकल सोल्यूशन आपके लिए फाइंड आउट द एनालिटिकल सोल्यूशन may be a little bit complicated. With programming, with a MATLAB, with a simple MATLAB 1 or 2 lines code, you can resolve that problem very easily. बिल्कुल जी। Okay, so with this, I will finish today's class. Best of luck for your exams and see you next week. थैंक यू वेरी मच। Okay. Thank you.